Good afternoon, ladies and gentlemen. We are going to start this beautiful day in a short while. Till then, enjoy the moment. Thank you.
All the ladies and gentlemen, I wish you warm and cheerful welcome on the behalf of Medanta, the Medicity Hospital. So can we start this day by bring some energy to the hall? एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम का, इस celebrations का. Thank you so much for being us here. I'm your host Priyanka Singh and I'm delighted and excited to welcome each one of you to this specially curated day. A day with full of celebration, a day with full of patience, a day with full of doctors and so much more. आप सभी जब वेदांता में आते हैं, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जब से ही आप एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं. अब चाहे वो प्री ट्रीटमेंट हो, ड्यूरिंग हो या फिर पोस्ट ट्रीटमेंट हो, हमें हमेशा यही कोशिश रहती है आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस का ध्यान रख सकें. और आज हम वर्ल्ड एर्थराइटिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी के साथ और हमें बहुत खुशी है आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस दिन हमारे मेदांता हॉस्पिटल में आए. आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं क्योंकि हम सब गैदर हुए हैं इधर, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं वो दिन. मुझे याद है आप सभी को कि आपके क्या स्ट्रगल्स रहे हैं. हम महसूस तो नहीं कर सकते आपका दर्द जो आप सभी ने झेला है, लेकिन समझ सकते हैं, महसूस तो आप ही कर सकते हैं वो स्ट्रगल, वो हर एक दिन जब आपको होप रहती थी कि एक दिन हम अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, फिर से चल पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर से ही सारी उम्मीदें होती हैं. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम वो ही सेलिब्रेशन के साथ, वो ही जो होप थी, पूरा सेलिब्रेट करने वाले हैं. एंड फॉर दिस I would like to call on stage, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Rashmi Chauhan Mehta, Senior Director, Ortho Anesthesia. एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे. Over to you, ma'am. Thank you, Priyanka. Good afternoon, everyone. I know we've all been waiting for a little while here, but let's hope it goes well from here on. We've all gathered here today to observe the World Arthritis Day. Now, why? Why do we need to observe a World Arthritis Day? So, this is something which was initiated some time back in 1996 to develop awareness amongst the global population. मैम आप आगे आ जाइए, आपके मुंह पे लाइट आ रही है, इस साइड आ जाइए. So World Arthritis Day has been observed to basically create, first of all, awareness that yes, a lot of people in the world suffer from arthritis, but also the fact that there's a lot which can be done for people who suffer from arthritis. And taking in the lead over here in Medanta is our group chairman, Dr. Ashok Rajgopal, leading a team. I mean, he's a luminary in himself, and he leads a team of a whole lot of specialists to provide care for patients. And I welcome him here today. He's very ably accompanied by Dr. Surendra Mohan Sharma, the chairman of Orthopedics Anesthesia. We are also grateful to the CMD, Dr. Trehan, and Mr. Pankaj Sahni for having given us this magnificent institution to practice our skills on and provide care to the patients. And like it said, in last year's theme for the World Arthritis Day was, it's in your hands, take action. So, not only are the patients supposed to take action, the action has to be taken by everyone around the patient, their family, the hospitals, the healthcare providers, the administration in these hospitals. And that's why this year it is that whatever be your disability, you have to live with it. Whatever be your problems, one can overcome them living at every stage of life. And keeping that motto up, I extend a very, very warm welcome to
all our patients who have come here with their families to further enhance the understanding of this disease, further enhance and spread the message that we would like to really percolate down around in the world, and I hope you will all carry the message outside also from here, that arthritis is something which is disabling, but it is something which can be overcome one step at a time by each and every one of us. So a very warm welcome again to all of you over here with us. Thank you. Thank you so much, ma'am. So all the ladies and gentlemen, आज हम उन सभी को सम्मान करने वाले हैं जिन्होंने नी सर्जरी में इस प्रोसेस को सफल तो बनाया ही है, जो कि हमारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो एक अद्भुतपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे पेशेंट्स ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ कि हाँ, मुझे फिर से खड़े होना है और चलना है। तो इसी के साथ, एज वी ऑल नो, टू इनिशिएट एनीथिंग ऑस्पिशियस वी ऑलवेज टेक द नेम ऑफ गॉड। हमारी कल्चर है, हमारी कल्चर ने सिखाया है हम हमेशा किसी भी काम की शुरुआत ईश्वर के नाम के साथ करते हैं। सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सरस्वती जी, द फर्स्ट परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी ऑन स्टेज। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, और एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज आवर फर्स्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारी पहली परफॉर्मेंस का हम स्वागत करते हैं। सरस्वती जी हमें ब्लेसिंग्स देने आई हैं।
Thank you. So, ladies and gentlemen, now I would like to call on stage a very, very special person in all of our life, जिन्होंने हम सभी को एक उम्मीद दी, एक मौका दिया, फिर से जीवन को एक नए तरीके से जीने का। ना जाने कितनों को मौका दिया अपने बच्चों की शादी में डांस करने का, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलने का, और ना ही जाने फिर से पार्क में एक जो वॉक हम करते हैं अपने साथियों के साथ, सभी का हमें मौका दिया है। एंड द वर्ड इनोवेशन इज एसोसिएटेड विद हिम। ही इज द फर्स्ट who has done the bilateral total knee replacement surgery. Yes, ladies and gentlemen, very talented Padma Shri, I would like to call on stage आपकी सभी की जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अशोक राजगोपाल। Thank you so much, sir. Over to you. Good morning, good afternoon, and welcome to each and every one of you. I'd like to take this opportunity to thank Dr. Naresh Trian, our CMD, who's been instrumental in setting up this institution. A very old, very dear friend, Dr. Surinder Sharma. We go back almost 37 years, Dr. Rashmi, and each and every one of you. You look so different than when I last saw you. It's lovely to see you. Thank you for coming and being a part of this celebration. And I thought we would start by doing a very short talk on arthritis. And this is just a very brief summary. A lot of you have already been through this process. In fact, all of you have been through this process. Some of you have asked these very questions, but I just, for people around you who have probably had the curiosity to understand what arthritis is all about. It's interesting to know that arthritis is the single largest cause of disability in orthopedics. This year, we would be almost touching 1 million knee replacements why is this going on its own? Oh, let me handle this. All right? Yeah, because, yeah. So, just in the course of the next 3 to 4 months, we would have touched almost 1 million knee replacements worldwide, so which is a staggering number. And the only thing that comes ahead of this in terms of numbers is cataract surgery. So we are actually the second largest volume area surgeries that are performed worldwide. How does this go forward? So for those of you who are curious, arthritis basically means that it's the wearing out of the cushion, the cartilage. The other point which is very interesting, a lot of people ask me about this, is arthritis can present itself at any age. You can have arthritis in a patient as young as 2 years old. And the predominant symptom is pain. And there are various causes of arthritis. The commonest that most of you have had your treatment for is degenerative or inflammatory, which is called rheumatoid या गठिया इसको बोलते हैं. Infections can cause arthritis, or injuries, fractures, चोट वगैरह लगने की वजह से भी arthritis आपका हो सकता है. Can you change it, please? Can I have control of it? I can change it from here. It's not working. So, any joint, किसी भी joint में we have bones, ligaments, the lining membrane, and the pain that you get is because of the inflammation of this lining membrane. Articular cartilage is the cushion on top of the bone, and then of course you have the muscles. A lot of people come to me
and ask me or tell me that doctor साहब मुझे osteoporosis है. Osteoporosis or osteoarthritis? Okay. So for you to understand, osteoporosis and osteoarthritis are completely the opposite. Osteoporosis में bone soft और brittle हो जाता है, osteoarthritis में bone hard हो जाता है. तो osteoporosis, osteoarthritis are two very, very different conditions, the exact opposite of each other. People want to know, keep getting asked this, daughters come and ask us कि डॉक्टर साहब ममा का ऑपरेशन हुआ है, क्या मेरे चांसेस हैं ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने के लिए. आर्थराइटिस हेरिडिटरी नहीं होती है. Some types of arthritis are like rheumatoid arthritis, but जो common arthritis है osteoarthritis, that is not hereditary. What can you do to avoid it? डॉक्टर साहब मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे ना हो, और क्या चीज़ें हैं जिससे इसका आउटकम इन्फ्लुएंस हो सकता है. 3 things that you need to understand: control your diabetes and thyroid, avoid weight gain. Obesity is the commonest cause of arthritis. Age group TKR कब हो सकता है? What is the age group that we can have it? You can do TKRs at pretty much any age. Joint replacement can be done at any age. Our youngest patient is 16 and our oldest patient is 104. So you can do replacement surgery for virtually any age group. How long does the knee implant last? Our longest surviving patient up till now is a lady who we operated 31 years ago, and she's still doing well. So all of you are in with a very good chance, because today's joints are much better than what we started off with. The materials, the technology, everything is much better. And so you have a very good option of this knee lasting at least 25 to 30 years. So like I said, avoid obesity, control your diabetes, do your regular exercises. काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ज़मीन पे बैठना अच्छा होता है या नहीं. कुछ हद तक अच्छा होता है, काफ़ी हद तक ख़राब होता है. जो religions हैं, for instance, Muslims who pray in the namaz position get into that position for extended lengths of time over a long time. They are at greater risk of arthritis, and as a community, the Middle East and Indonesia, which has a predominant Muslim population, has the highest incidence of arthritis. तो हमारा जो ये समझना है कि ज़मीन पे बैठ के चौकड़ी लगा के बैठना या वज्रासन में बैठना अच्छा होता है, लेकिन in excess it does cause damage, so just be aware of that. Can you change it, please? So like I said, you can do this any age from 15 to 97, and your knee joint should last about 30 years if it's been done well and you take care of it. Next. So at what stage should you come for treatment? अगर आपको पेन शुरू हो रहा है and you have pain at rest, particularly आप रात को बेड में हैं, आप करवट बदल रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, आपने कॉमन ट्रीटमेंट मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑइंटमेंट्स ये सब लगाया है और आपको पेन में रिलीफ नहीं हो रहा है, यू शुड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर. किसी से जाके आप सलाह लें. लेकिन अगर डिफॉर्मिटी है, आपकी टांगें टेढ़ी हो रही हैं, आप नहीं चल पा रहे हैं, आपको लिम्फ हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. सो टिपिकली आप लोगों ने अपने ही एक्सरेज देखे होंगे, कुछ इसी प्रकार के होते हैं, कुछ टेढ़े, कुछ सीधे, कुछ बहुत बुरे हालत में. और जब इस हालत में आ जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली सर्जरी होता है. हर नी पेन या हर आर्थराइटिस के पेशेंट को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. टोटल अगर आप 100 आर्थराइटिस के पेशेंट्स को देखते हैं तो उसमें से अबाउट 15 to 20% को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है. 70 to 80% will get treated with physiotherapy. Next slide. So as I said, the first line of treatment is physiotherapy
मेडिसिन्स, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जो टेलीस्कोप डाल के हम लोग करते हैं वेरी अर्ली स्टेजेस। काफ़ी बार जो टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, पेशेंट रिलेटिवली अर्ली आता है, तो इसमें हम लोग रिप्लेसमेंट के अलावा भी और ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम कर सकते हैं। और जो एक्सट्रीम एग्जांपल्स होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, दीज आर पेशेंट्स हु नीड नी रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। सो मेडिसिन्स आपके वोवरान हैं, सेलिकॉक्सेब। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप में से कई लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा भी हुआ है और शायद आपको मैं आगे के लिए भी बता दूं, ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का कोई रोल नहीं होता है। इंजेक्शंस का आर्थराइटिस में रोल नहीं होता है। आजकल कम से कम 5-6 किस्म के इंजेक्शंस हैं आपके, स्टीरॉइड्स हैं, हाइलोरॉनिक एसिड है, स्टेम सेल्स है, मेसेनकाइमल सेल्स है, पीआरपी है। इसका कोई रोल नहीं है आर्थराइटिस के मैनेजमेंट में। कुछ लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन भी ट्राई करते हैं, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, रेकी। ये दिमाग को ज़्यादा सुकून देता है, घुटने और कुल्हे को कम देता है, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मन को शांति देता है ये। नेक्स्ट। तो फिजियोथेरेपी में कई ऑप्शंस हैं और मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि जब भी आपको तकलीफ़ हो, सबसे पहले आप कंसल्ट करें। फिजियोथेरेपी आप अच्छे तरीके से करें, काफ़ी पेशेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। और समझने की बात यह है कि जो मेडिसिन आप पेशेंट्स को आप ले रहे हो, ये आपका एक मैनेजमेंट ऑप्शन है जिससे आपकी तकलीफ़ को आप बर्दाश्त करके चला रहे हो। एक स्टेज तक ये काम करेगा, उसके आगे अगर आपको दिक्कत होगी तो इसमें आपको सर्जरी कंसिडर करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ कि हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो 10-12 साल से एंटी इन्फ्लेमेटरीज या वोवरान इस तरह की दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है। तो हमारे जितने पेन किलर्स हैं, हमेशा याद रखिए कि उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट किडनी पे होता है। तो अगर आप बहुत लंबे अरसे तक के लिए आप ये मेडिसिन लेते हैं तो अपना ध्यान रखिएगा कि आप अपने किडनी को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो सर्जरीज भी कई किस्म की होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी एक की होल सर्जरी होती है। इट्स लाइक जनरल सर्जरी में आप टेलीस्कोप के ज़रिए गॉल ब्लैडर वगैरह निकलवा सकते हो, ये हमारा इक्विवेलेंट है। और इसमें आर्थराइटिस के सिचुएशन में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का रोल टेम्परेरी होता है। दिस डज नॉट क्योर द आर्थराइटिस। Next slide. So that's what this is basically just a way to delay the surgery. आपको कोई acute problem है, आप ये कर सकते हो, कुछ टाइम आपको मिल जाता है, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन जिस पेशेंट को आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत है, अबाउट 60% ऑफ दीज अल्टीमेटली इनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट। दूसरा होता है रीअलाइनमेंट सर्जरी। इसको आप लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के नाम से भी जानते हो। ये बड़ा एक सिलेक्टिव ग्रुप है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी आर्थराइटिस जोड़ के एक ही हिस्से में सीमित रहती है। तो आज हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सिर्फ जो अफेक्टेड पार्ट है सिर्फ उसको हम रिप्लेस करते हैं। इसको हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यूनिक कंपार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट, रीअलाइनमेंट सर्जरी बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड रिज़ल्ट और इसकी लाइफ स्पैन टिपिकली अबाउट 15 to 17 ईयर्स होता है। तो जो पेशेंट्स यंग आते हैं हमारे पास, उसमें हमारी कोशिश रहती है कि पूरा नी ना रिप्लेस करके पार्शियल नी रिप्लेस किया जाए। नेक्स्ट। तो एक्सरेज में आपका इस तरीके से आपका होता है। आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ हमने ये पार्ट रिप्लेस किया, ये आपका अपना है, ये पार्शियल रिप्लेसमेंट है, इसको यूनिक कंपार्टमेंट सर्जरी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है, जो आप में से कईयों ने करवाया हुआ है, ये बेसिकली आपके थाई बोन के निचले हिस्से और आपकी लेग बोन की ऊपर के हिस्से को हम लोग रिप्लेस करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो कार्टिलेज, जो मैंने आपको क्वेश्चन के बाद बताई थी, वो एक तरह का प्लास्टिक होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन बोलते हैं। ये इंटरफेस होता है जिसकी वजह से आप घुटने को मोड़ सकते हो और आप इसको चल सकते हो। नेक्स्ट। और इसको हम लोग एक सीमेंट होता है जो एक पॉलीमर है,
एक लिक्विड और पाउडर का मिश्रण होता है और ये एक तरह से आटे की तरह हो जाता है और ये सेट होता है करीब 6 से 8 मिनट में और वो आप इसकी वजह से आपका जो जोड़ है आपकी हड्डी से जुड़ जाता है और ये फिर छूटता नहीं है, बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है और इसको हम लोग बोन सीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह का कुछ आपका एक्सरे, आप में से कईयों को इस तरह का इम्प्लांट हो सकता है, आप में से किसी का ही ये एक्सरे हो। सो दिस इज़ रियली व्हाट नी रिप्लेसमेंट लुक्स लाइक। कैन हैव द नेक्स्ट स्लाइड। जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग फॉलो करते हैं कि इसमें स्टेरिलिटी की बहुत ज़रूरत है। आप में से कईयों को, सभी को ये बताया गया होगा कि आपके रिलेशंस आपके साथ कमरे में नहीं रुक सकते हैं। कुछ लोग उससे नाराज़ भी हुए हैं हमारे से, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोग इन्फेक्शन को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। फिज़ियोथेरेपी इस ऑपरेशन की एक बहुत अहम हिस्सा है और जो मैं बात आप में से कईयों को समझाना चाहूँगा कि अपना फॉलोअप ज़रूर करिएगा। आमतौर से ये होता है सर्जरी हुई, आप ठीक हुए, उसके बाद आप ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में आना बंद कर देते हैं। 12-18 महीने में एक चक्कर काटना आपके घुटने और आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। जस्ट अ फॉलोअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। once a year, once in 18 months, please do try and come over. और लास्ट चीज़ है कि आप सब ने महसूस किया होगा कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जो कुदरती गॉड गिवन नी है उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आप जैसे इंडियन टॉयलेट पे नहीं बैठ सकते हैं, ज़मीन पे भी अगर आपने बैठना है तो केयरफुली आपको बैठना है। तो कुछ लाइफस्टाइल ऑल्ट्रेशंस इस सर्जरी का एक हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस एंड द लास्ट पॉइंट इज़, अगर आप इस सर्जरी के बाद आपको कभी भी किसी और सर्जरी की ज़रूरत पड़े, जैसे आपको कोई डेंटल एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़े, कोई गायनी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़े, कोई और सर्जरी की ज़रूरत पड़े, तो हमेशा इसको एंटीबायोटिक्स के कवर में कराइए, क्योंकि इन्फेक्शन उस एरिया से आपके नी के अंदर जा सकता है और इसको हम लोग मेटास्टैटिक इन्फेक्शन बोलते हैं और आपका नी जॉइंट रिस्क पे होता है। और इस जॉइंट के ऊपर गर्म सिकाई ज़िंदगी में कभी भी मत करिएगा। हमने देखा है कि क्योंकि ये बहुत एक पॉलिश सरफेस होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो स्किन को बर्न कर सकता है। सो दैट्स समथिंग दैट शुड नेवर बी डन। नेक्स्ट। और सबसे बड़ी बात है कि, और ये भी आप में से कईयों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप आए हैं मेरे पास, मैं हमेशा लोगों को कहता है ये सर्जरी सिर्फ आप तब कराओ जब आपकी अपनी मर्ज़ी हो, क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन जो प्रोसीजर है ये आपके पूरी ट्रीटमेंट का सिर्फ 15 या 20% है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज, आपकी डिसिप्लिन, आपका फिज़ियोथेरेपी, आपके प्रिकॉशंस आर व्हाट विल गेट यू अ गुड रिज़ल्ट। और आप सब ने, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, आपने वो बात मानी, सुनी। हम लोग कभी काफ़ी बार जब आप लोग हॉस्पिटल में थे, वी हैव बीन क्वाइट डिफ़िकल्ट विथ यू, वी हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट विथ यू। सो एट दिस पॉइंट आई apologize for that, but we do it so that all of you get better. और आखिर में मैं दो बात और कहना चाहूँगा कि हमारे आप में से जो भी यहाँ बैठे हैं who are happy with your result, I want you to understand that this is not my individual contribution. We have contribution from anesthesia, Dr. Rashmi, Dr. Surinder Sharma, my colleagues in my department, the physiotherapist, the hospital itself, which has provided us excellent operating room facilities. We have one of the finest operation theaters in the world. The equipment that we use are world class. And most importantly, the nursing care that we have. I do believe we have amongst the finest nurses in the world. And I travel a lot, I operate a lot overseas also. और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमारी nursing care है हमारे फ्लोर पे, this would be amongst the best in the world. So with that, I welcome you. I thank you all for being here. Thank you very much. We will do later. We have the session for this.
Thank you so much, sir. And today, I pay homage to the profession that epitomize the compassion, knowledge, and the unwavering dedication. So yes, it is the medical professional, the doctors. ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा नोबल कॉज है जहाँ इंसान खुद को भगवान नहीं बनाता है, खुद को नहीं समझता है भगवान, इवन लोग, दूसरे लोग उसे भगवान बना देते हैं. You are the guardian of our life, I must say. You restore the faith in the face of despair. आपके पास सभी लोग एक उम्मीद लेकर आते हैं कि आते तो व्हील चेयर पर हैं, एक डर के साथ, एक अनसर्टिनिटी के साथ और एक होप के साथ फिर से हम चलेंगे, फिर से हम दौड़ेंगे. और जब जाते हैं तो वो इसी होप को जो यकीन में बदल जाती है उसके साथ जाते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, as I have told you, today we all have so much fun, celebration. We have the amazing versatile performance for all of you. और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही खास स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है, विच इज स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू. सो कुछ ही देर में वो भी आएंगी, लेकिन नाउ वी वेलकम आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, लेडीज एंड जेंटलमैन. We have the Bollywood dance for you, and after this we all, जितने भी हम सभी हैं, स्टेज पर, मंच पर आने वाले हैं. सो इस परफॉर्मेंस को आप इंजॉय करिए, उसके बाद हम सभी एक साथ मंच पर इंजॉय करेंगे. थैंक यू.
So now, ladies and gentlemen, it's time for all of you to come here. And we are going to do the fashion ramp walk. आपने अपने बच्चे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को तो देखा होगा. आज बारी है आप सभी की कि एक के बाद एक हम सारे सेलिब्रेट करें जॉय ऑफ मोशन. और वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जब तक आप मंच पर एक रैम्प वॉक नहीं करेंगे, जब तक कैसे पता लगेगा कि यस वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे, बिकॉज आज हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल डे है. और मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले आप सभी जितने भी इस साइड के हमारे मेंबर्स हैं, आप इधर से आएँ और आप इस साइड से आएँ. And so for this, सबसे पहले we are going to start with your favorite Dr. Ashok Rajgopal and the शालिनी गांधी जी हमारे बीच में हैं. सबसे पहले हम इनके साथ करना सबको है रैम्प वॉक, सबको, किसी को बैठना नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो भी आए हैं वो वीडियो बनाएंगे और पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे. क्योंकि फैमिली, व्हेन यू विल वॉक एंड योर फैमिली विल सी दैट यस आज दादी ने या दादा ने आज वॉक की है, उनकी अलग ही खुशी होगी. तो उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए क्यों ना हम आज एक साथ इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें एक रैम्प फैशन वॉक से. तो सबसे पहले हमारे बीच में जो आ रहे हैं डॉक्टर अशोक राजगोपाल जी और उनके साथ शालिनी गांधी जी आ गई हैं. और जितने भी सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी जितने भी हमारे लेफ्ट साइड में हैं, राइट साइड वाले तो एक्साइटेड है, लेफ्ट साइड वाले आपको थोड़ा सा और एक्साइटमेंट. यस सर, थैंक यू. सो जितने भी हमारे पीछे बैठे हैं, मैम आप प्लीज़ आ जाइए. आज हम इंजॉय करने वाले हैं. ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी आपके लिए जैसा मैंने बताया सरप्राइज परफॉर्मेंस भी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. तो हम सभी एक साथ वॉक करेंगे और वॉक के बाद बीच में साइड में खड़े हो जाएंगे जिससे कि हमारी एक ग्रुप फोटो आ सके और आज के मोमेंट को हम कैप्चर कर सकें. मैम ओके. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द अटेंडेंट प्लीज, हाँ फोटो वीडियो पक्का कैप्चर करें सबकी. सो वन बाय वन हमारे साथ सबसे पहले मैम हमारे बीच में आ गई हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग द जॉय ऑफ मोशन विद ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ मेदांता. आज हम एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत ही खुशी का पल है हम सबके लिए. What a beautiful walk it is. I request you please stay here so that we can have a photo session. Give a big round of applause to all the participants. Wow, amazing. All the actions we can see. लगता है मैम जूडो कराटे की प्लेयर है. तालियां बजती रहेंगी सभी के लिए. वो अमेजिंग.
What a beautiful walk, I must say. All are so excited. तालियां बजती रहे. It's a marching on the ramp walk. Old song. DJ, आओ हुजूर. Song, आओ हुजूर. आओ हुजूर वाला. DJ, yes, you are here. This moment is captured by मेदांता, क्योंकि हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है. आप सभी जॉय ऑफ मोशन हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. डू फास्ट डीजे. आओ हुजूर. Old is always gold, as we all know. All done? All done? So now, with us, Dr. Ashok Rajgopal. Just because of them, we are here today. Whoa! This is the incredible walk that I can see ever.
सो एक फोटो सेशन, ग्रुप पिक्चर. थोड़ा सभी पास आ जाएंगे. DJ stop. We are capturing the moment with all of you in a photo. आगे बोलो. I request आप थोड़ा सा सभी आगे आ जाएं. And ladies and gentlemen, as you can see on the ramp, she is our oldest patient. And see her energy. What a beautiful walk. This is incredible, I must say. सो फोटो सेशन, एक ग्रुप फोटो होने वाली है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू सभी थोड़ा पास हो जाएं सो दैट वी कैन कम इन अ वन फ्रेम. थैंक यू सो मच. आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज बी सीटेड. सभी लोग बैठ जाएं. और आज हम वो सब कहानियाँ, वो सब स्टोरीज डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही पर्सनल लेवल पर फील की गई हैं, जिन्होंने एक यात्रा जो कि इतनी मुश्किल थी उसे पार किया, जिससे कि आगे के जीवन को सफल बनाया जा सके. आज बहुत कुछ होने वाला है. आपने अपनी रैंप वॉक जो की आप सभी ने, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू कि आप सभी आए, एक साथ आए. एक भी पेशेंट भी नहीं था जो नीचे बैठे हों. सभी लोगों ने जो जॉय ऑफ मोशन है अच्छे से सभी ने इन्जॉय किया है. और आज हमने ये मोमेंट को कैप्चर भी कर लिया है सो दैट वी कैन enjoy, or we can, whenever we see the pic, we will enjoy immediately. So, जैसा कि मैंने कहा था, आज एक स्पेशल परफॉर्मेंस और सरप्राइज परफॉर्मेंस, म्यूजिक परफॉर्मेंस आप सभी के लिए है. सो कोई गेस कर सकता है कि वो क्या, कौन आने वाला है?
कोई गेस कर सकता है कि अब जो म्यूजिक परफॉर्मेंस आप सभी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू, डॉक्टर 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 अशोक राजगोपाल जी, आपको कैसे पता? यू नो अबाउट हिम? डांसर? ओके, मुझे अभी पता लगा, मुझे ये बात अभी पता लगी. So yes, ladies and gentlemen, you are right. Before you, Dr. Ashok Rajgopal is coming, but not for dancing. He's coming for anything. He's coming for harmonica performance. और ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए डेडिकेट की गई है आज के दिन के लिए. So एक बार जोरदार तालियों से we welcome him. वो शोले का एक डायलॉग था, ये हमारे टाइम के जेलर थे, ये हमारे टाइम का गाना है. हाउ मेनी ऑफ यू आर देवानंद फैंस हियर? सर हम भी हैं. चलिए, तो एक बहुत पुराना, बहुत बढ़िया, बहुत मधुर देवानंद साहब, उनका 100वां एनिवर्सरी था. So I'm going to play one short song. आपने सुना होगा, है अपना दिल तो आवारा. Dedicated to all of you. Thank you. Thank you. This is your morning. Yeah, आपके लिए. This is for you. Thank you so much. God bless. What a marvelous, and I can see you all have enjoyed very well. And आप सभी के लिए सरप्राइज था, मैंने पहले नहीं बताया था, पहले से मैंने आप सभी को ये तो बता दिया था, आज आपके लिए एक ऐसी स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है जो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है. आप सभी से अच्छा कौन जान सकता है डॉक्टर अशोक राजगोपाल जी को, क्योंकि आप इनके साथ इतने टाइम से रहे हैं. और आज अब ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं आप सबकी जो आज आप शेयर करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो अपनी कहानी को शेयर करने वाली, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को हम सभी के साथ शेयर करने वाली हैं, आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज मिस शालिनी गांधी. एक बार जोरदार तालियों के साथ वी वेलकम. ओवर टू यू मैम.
Hello, everyone. First of all, I'm here straight. I've had my first surgery through Dr. Rajgopal in 2004 for a total hip replacement. My revision surgery was again done by him in 2018 because I remember categorically that the first time he met me, and I had so many questions to ask. Sir, what surgery are you going to perform? Because I'm very young. So he said, cemented. And by then, Google was surfing, so I had done my homework. And I said, why? I'm so young. Why aren't you doing uncemented? He says, Shalini, your next question will be, how long? Cemented, shelf life, 20 years. Considering your age, 15 years, over and above bonus. Uncemented, lifelong, 1 year, 10 years, to newer technology. So I can't say. I said, okay, well, that's okay. So next question I popped in. So can you operate me on this date? And he was looking at my face. He says, why? I said, you're telling me that I need for recovery 15 days for first stitch removal and another 15 for the other part. At that time, it used to be stitches were removed alternatively with a gap of 15 or 7 days. So I said, that means my children would start their school in July. So I will be up and about. So June I get with them. So you operate me. So that's how our, our association began. But now we are like a family. For so many years we've known each other. And I always say he's my godfather. Because believe me, there is nothing that I cannot do. I can do everything. I dance. I do my walks. You will be surprised. I do a 7-kilometer walk every day. So this is all and all. Thanks to Dr. Rajgopal. From the bottom of my heart, I thank him always. Thank you so much, ma'am, for sharing your experience. Now, I would like to call on stage one another who will share her experience, Ms. Renuka Mehra. We will welcome him with a big round of applause. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. Well, I had been suffering from my knee problem for quite a while, but then discussed with friends, family. They said, knee replacement, the last word, Dr. Ashok Rajgopal, otherwise don't get it done. So I had no choice, although we stay in Greater Kailash, considering the distance and traffic. I said, doesn't matter, it's just a question of few days. We have to be here only. So met him once, and I mean, he must have seen my hesitation and the scared look which I had. So he said, okay, you take your time and then give your okay for it. But you have to decide, no one else. So anyway, I reached home. I said, let me get over with it once and for all. So I think immediately I sent him okay. Yes, I'm ready for it. And then the whole procedures started. But I had a little complication that pre-surgery tests, they found a blockage in the main artery. So knee replacement had to be postponed by a few months. So I had to first get a stent done, which again Dr. Rajgopal put me on to Dr. Gagandeep. And so after his clearance, finally it's a year now, and I've had absolutely no problem. Initially, of course, the suffering is there, but then I think it's worth it
because after a month or 2 months at the most, you forget that and you feel so relieved that you are able to walk around, do whatever you want without having to take any painkiller or this thing. So anyone who hesitates, I think they should just forget about it and get it done at the earliest to be free from it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your experience, your life experience, क्योंकि you have gone through all the pain and we can also understand your pain. और अब जिसके भी जो भी questions हो, query हो related to your health and your knee surgery या फिर कुछ भी पूछना हो, you can ask. Yes, ma'am. हेलो नहीं आ हेलो हेलो I welcome all. I'm very happy to meet Dr. Saab. I just want to ask, I've done my surgery 2 years before, but I'm having a bit of stiffness and I do 10,000 steps daily for walk. Is it much or what should I do? Daily I do 10,000 steps. Increase it to 15,000. Sorry? Increase it to 15,000. Only stiffness, there's no problem. I'm very happy for the operation, everything. Stiffness is a natural consequence of the surgery. Okay. It happens in about 70 to 80% of patients. Okay. For some reason that we cannot explain, it happens more frequently in female than in males, but always gets over. Some never have it, some have it for 12 months, some have it for 15 months, some have it for 2 years. Always it goes away. And just keep walking, keep enjoying. There's And no exercise also. exercise. One of the things that a lot of people ask me is, if I walk too much, will my knee get worn out earlier? ज़्यादा चलेंगे तो जल्दी घिस तो नहीं जाएगा, नहीं घिसेगा. आप जितना चलना चाहें चल सकते हैं. इसमें कोई ऐसी there is no limit to the amount that you need to walk. Just be careful that you don't fall. कोई चोट ना लगे, कोई twist ना हो. But otherwise there is no Thank you. reason. Yeah. Anyone have any query? Health? Yes, sir. डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद. और आज मैं स्पेशली आपको धन्यवाद ज्ञापन करने आया हूँ. और मैं सिर्फ छोटा सा एक सवाल है कि बहुत देर खड़े रहने से क्या घुटने पे कोई असर पड़ता है या दर्द होता है? अगर आप बहुत लंबे अरसे तक एक जगह पे खड़े रहें तो थोड़ा बहुत तकलीफ़ ज़रूर होता है, ख़ास करके नी रिप्लेसमेंट के बाद. जो एक चीज़ हम लोग नोटिस करते हैं कि एक जगह पे आप खड़े होके अपना, जैसे लेडीज़ हैं किचन में एक जगह पे खड़े होके आधा पौना घंटा वो नहीं कर पाती हैं कुछ समय के लिए. ये भी टाइम रिलेटेड होता है, 6-8 महीने के बाद हो जाता है. बाकी इसमें जितना आप खड़े होके करना चाहें कर सकते हैं. अगर एक जगह पे खड़े रहना है तो मेरी सलाह ये होती है कि आफ्टर अबाउट 45 मिनट्स 2-4 कदम थोड़ा सा चल लिए, थोड़ा सा सर्कुलेशन बढ़ जाता है, थोड़ी सी नी में मूवमेंट आ जाती है. क्योंकि जैसे मैंने बताया था, स्टिफनेस एक हीलिंग प्रोसेस या रिकवरी का एक इंटीग्रल पार्ट है. तो इट टेक्स अबाउट 1 or 2 years, बट आफ्टर दैट इवेंचुअली इट सेटल्स डाउन. और दूसरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर साहब, ये हम लोग रात को सोते हैं और आजकल जैसा है एयर कंडीशनर चला दिया, तो क्या ठंड से जो ऑपरेटेड नी है उसमें कोई स्टिफनेस आती है? नी जॉइंट आम तौर से ख़ास करके जो आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं, ऑपरेशन से पहले एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, इसको
कहते हैं बैरोमेट्रिक नीज। जिस पेशेंट को आर्थराइटिस है वो एक्चुअली प्रिडिक्ट कर सकता है कि मौसम बदलने वाला है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ लाइट हार्टेड कमेंट, दिस इज़ एक्चुअली अ रियलिटी, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये होता है। सर्जरी के बाद करीब 1.5 से 2 साल तक थोड़ा बहुत विंटर्स में स्टिफनेस बढ़ता है, थोड़ा बहुत हैवीनेस बढ़ता है। एसी में अगर टेम्परेचर बहुत लो, आप 17-18 पर रख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि जॉइंट आपका थोड़ा सा अकड़ा हुआ है। 1.5-2 साल के बाद ये फीलिंग हट जाती है। अगर एसी चल रहा है और ढक के सो रहे हैं पैर को, कोई नुकसान नहीं, तो नुकसान नहीं। नुकसान बिल्कुल। अगर खुला रह गया तो ऐसा लगता है जैसे स्टिफ हो गया है। जी। तीसरा मेरा एक प्रश्न था कि ये जो पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, पैरों में, थाइज में, इसका भी क्या घुटने से कोई रिलेशन है? जी नहीं, क्रैम्प्स एक अलग चीज़ है, इसमें मसल्स आपके स्पैज़म में चले जाते हैं। इसके कई कारण हैं, घुटना इसका कारण नहीं है। आमतौर से हम लोग 6-8 महीने, साल तक भी विटामिन ई का कैप्सूल एडवाइस करते हैं। आप में से कई लोगों को मैंने एडवाइस भी किया होगा कि इसको इंटरमिटेंटली बीच बीच में आप लेते रहें, उससे ही ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, कुछ व्यूअर्स हमारे ऑनलाइन हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, सो करीबन 2000 पीपल आर व्यूइंग दिस इवेंट राइट नाउ। उनके मैं 2 से 3 क्वेश्चंस लूँगी सर, कंसिडरिंग टाइम बहुत कम है हमारे पास। एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि क्या वो 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं और सर्जरी के कितने दिन बाद से शुरू कर सकते हैं? 4 व्हीलर आमतौर से जो सेफली आप ड्राइव कर सकते हैं अबाउट 8 वीक्स के बाद। और अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसमें आपको क्लच बार बार गियर्स चेंज ना करना पड़े, यू कैन स्टार्ट दैट इन अबाउट 6 वीक्स। सर, अगला क्वेश्चन है, वेदर नी रिप्लेसमेंट लीड्स टू बैक पेन इन लॉन्ग टर्म फॉर एज्ड पर्सन विद एज ऑफ 82 years? Not at all. In fact, it is a relief for patients with backache because knee arthritis causes a certain amount of change in the way they walk that causes aggravation of back symptoms. In fact, a lot of our patients are referred to our spine colleague, Dr. Mathur. We send a lot of our patients to them. But the answer to the question is that patients with knee arthritis, having had surgery for the knee, the backache reduces substantially. Thank you, sir. डॉक्टर साहब, जब मैं चलती हूँ ना, जैसे 40 मिनट या 50 मिनट, तो घर आके लेटती हूँ तो कमर में उठती हूँ तो तब थोड़ा पेन होता है, फिर ठीक हो जाता है थोड़ी देर बाद। जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं। इसके लिए आप सिर्फ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल आपके साथ ही बैठे हुए हैं, आलोक जी बैठे हुए हैं, आप इनसे कंसल्ट कर लें, या भी आपको लंच के दौरान आपको यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज का रूटीन समझा देंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। Last question we'll be taking. आप मुझे बता दीजिए क्या क्वेश्चन? अच्छा, रिपीट हो जाए। Any question? Is morning stiffness at a young age an early sign of arthritis? Is morning stiffness in hands at young age is an early sign of arthritis? Usually not. Usually not. Because early morning stiffness is a symptom that can be a representation of various things. Arthritis is one of them, but not the only cause. You can have something like that's called a carpal tunnel syndrome. That's very common in females with thyroid disease or diabetes or obesity. So, answer to your question is no, but it's one of the reasons that may cause stiffness in the morning. Morning stiffness can be a sign of arthritis, but not the only cause. Thank you. Thank you, sir. I think that's it for the questions. I'll hand over the mic to Priyanka. थैंक यू सो मच सर। आप सभी के डाउट्स, जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, और आगे भी आप पूछ सकते हैं क्योंकि कंसल्ट तो आप तो फैमिली मेंबर्स हैं, तो कोई भी कैसी भी क्वेरी हो हेल्थ एक्सपर्ट के बारे में, नी सर्जरी रिप्लेसमेंट, आप कंसल्ट कर सकते हैं।
And as we all know, today we are celebrating the joy of motion. तो अभी आप सभी के लिए एक और परफॉर्मेंस है जो स्टेज पे आप सभी के लिए आप इंजॉय करें और कुछ ही देर बाद हम सभी फिर से एंड करें. ओके. So, ladies and gentlemen, now I would like to say we are running short of time. So first of all, I thank you so much for taking the time out from your heavy schedule and marking this spectacular day with your glorious presence. मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में आए. और इसी के लिए I would like to call on stage Dr. Surendra Mohan Sharma. Ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause, Chairman, Ortho Anesthesia Department. I request you, sir, please come upon the stage. Over to you, sir. Namaskar. My job is to thank all the people who have made this day a success. So the first I thank the Almighty God, who is the creator and the protector of us all in this universe. Then I thank the hospital authorities, Dr. Trehan, Dr. Pankaj, and his team for providing us this facility where we could help you and serve you and make you feel better. I also thank all the doctors, nurses, technicians, paramedical staff, and all the people who are associated with this hospital administration and the management of patients in all forms, including the meals, for providing us this facility in such a way and helping you all in such a way that we could see this day and you had a successful surgical outcome and be here with us in this happy occasion. I always tell my patients when I go for the round the next day morning, the first question which they normally ask is, would I be able to walk? मैं चल पाऊंगी, मैं कब उठूंगी, मैं कब उठूंगा? तो मैं उन सबको यही कहता हूँ कि the time has come जब आपको ओलंपिक की तैयारी करवाएंगे, आप उस दौड़ में भागें या ना भागें. That's my common thing. And I always tell them that पहले तो आपकी मम्मी पापा ने आपको चलना सिखाया था, अब हमारे फिजियोथेरेपी वाले आपको चलना सिखाएंगे. Our physiotherapist, Dr. Kalpana, unfortunately she is busy in some family medical issue, and her team, they are the ones who make you stand and they are the ones who make you walk. And then from your side as well as for other team, I thank Dr. Ashok Rajgopal, who is the leader of this whole concept of not to boast, is one of the best in the world, and people come here to see, and we have surgeons from various institutes of the world, from US, Europe, Australia, everywhere. They come and be with us for a little while, and at the end of it, they are so impressed with this. The many of them say, of course jokingly, that wish they were working here in this unit, which is so well organized. And I think when I see you all here and all other patients, then I think it gives us lot of happiness that we have been able to help you all. So in the last, I thank you, all of you, the people who have organized this, and the guys who have prepared some meals for you. Thank you so much. Thanks for being here. And of course, the biggest thank is to you all, because we are here because of you and for coming here and sharing with us your happiness. Thank you so much. Thank you, sir. And thank you all the ladies and gentlemen. Now you can proceed for the lunch, and I will pray your health and your happiness. Thank you so much.